टिके पे कन्फर्म कर ऑडियो क्लियर आसी कन्फर्म कर दियो और सब शेयर कर दो वीडियो जस्ट लाइव ऑन हला परफेक्ट टेलीग्राम रे शेयर हो गला नेक्स्ट हला व्हाट्सएप ग्रुप रे परफेक्ट ये बीएड पिला एग्जाम फसीदेला मत थर्ड सेमेस्टर अच्छी ओके हाँ ठीक अच्छे थर्ड सेमेस्टर पुणी पढ़ाई पड़ो ठीक अच्छे ठीक अच्छे नो इश्यूज सब सरीगला परफेक्ट ओके टिके वेट कर समस्त आसी जॉइन हो जातु ना कौन कौच पे हाँ ठीक अच्छे एगेन समस्त ऑडियो क्लियर से पे एगेन नमस्कार जय प्रणाम हेलो हेलो श्रद्धांजलि हेलो अन्य मन समस्त हेलो नमस्कार नमस्कार समस्त को नमस्कार पे मैंने प्रणाम टिके अपेक्षा कर समस्त टिके आज जॉइन हो जातु ना कौन कौच पे जय जगन्नाथ प्रणाम प्रणाम देवी कृष्ण नाइट बोर्ड कहतु मत रिप्लाई दब नाइट बोर्ड गोटे ऑटोमेटिक सिस्टम पे से ऑटोमेटिक जहाँ कमेंट सॉरी कमांड दिया जीवो से कमांड हिसाब से रिप्लाई दब ना कि तुम कमेंट पे मैंने हाँ हर हर महादेव हर हर महादेव ठीक अच्छे पे टिके अपेक्षा कर समस्त आसी जॉइन हो जातु टिके अपेक्षा कर प्रणाम प्रणाम पूजा प्रणाम कौन कटअप फटअप सब डिस्कसन करूँ तुम मैंने आसला बेला को सब सरीगला डिस्कसन मुझे बस मैंने कौन कर जेनजी मानकर जो माने उकसौचंती पिला मानकु पुलिस मानकु वीडियो देखु देखु मु देखि चलची जय जना चेकी मु तो देखा मोर सरुनी मु देखुची खाली नेक्स्ट तापर वीडियो स्क्रॉल करी चलची यूट्यूब रे आ जेनजी खाली टिके खेलेला माने जेनजी खाली जेनजी प्रणाम प्रणाम शुभस्मिता प्रणाम खाली चेंज किंतु अलगा अलगा लेवल चली माने प्रोटेस्ट मजा नौ प्रोटेस्ट प्रॉपर मजा नौ पिला सातटा क्लास नहीं सातटा मुझे शेड्यूल कर देती बट 8टा हबार था क्लास शेड्यूल 7टा कर देती जेहेतु व्यस्त थी माने से चेक करनी मुझे शेड्यूल कर दी जेपी नटा कौ पड़ो छाड़ा ता कथा हो एगे नमस्कार प्रणाम जजन समस्त स्टार्ट कर आज क्लासेस ठीक अच्छे किए अच्छा मिस्टी को डाकी दियो ना पचार आसी गाड़ी कर मत कहीं डाकिले सर हो ठीक अच्छे प्रीवियस क्लास आम कहूचे क्लास 1 जोटा कहे कन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेमिंग एडॉप्शन ऊपर मोस्टली आम कहे 125 क्वेश्चन था भीतर टोटल जदि आम कहीपर प्रॉपर जदि आम देखा ताहले पाखापाखि 110 क्वेश्चन यूनिक थिला किछि
रिपीटेड क्वेश्चंस थिला सेति मु क्षमा चाहूँ अगेन आज सेकंड क्लास जोटा को प्रिएम्बल बोर्ड फीचर्स एंड शेड्यूल्स एंड पार्ट्स नेक्स्ट क्लास 2 रे आम आज डिस्कस करबा आज क्लासेस रे अगेन थैंक यू समस्त को नमस्कार स्टार्ट करबा आज क्लासेस सर बिहार पिलांको काम देखिले कि हाँ सेही बात देख सेहीटा ही देखुतली बसे हो समस्त पिले माने की सब अच्छा प्रेजेंट अच्छा हाँ समस्त प्रेजेंट अच्छा एक बिहारी सब पे बारी हाँ ठीक अच्छे अगेन नमस्कार समस्त ठीक है स्टार्ट करबा आज क्लासेस सकला व्हिच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट व्हाट इज रेड पेन टाइम बाहर करते समस्त 120 सेकंड स्किप कर दियो पिले माने 120 सेकंड स्किप नॉट 2x स्पीड ऑन कर दो 2x स्पीड ठीक अच्छे हो which historical document served as the foundational basis for the ideals incorporated into the preamble of the Indian Constitution समझते आंसर देते पहले माने परफेक्ट है वेरी गुड आने माने में आंसर दियो समस्त को आंसर न पाइबा पर्यंत तो नेक्स्ट जीवन कहार भूल तो देखिले मु गाड़ी करी ताको ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन द परफेक्ट आंसर हम कहूचे हां नहीं वेरी गुड हां द आइडियाज एम्बेडेड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव बाय पीटी जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूशन आसुली वे फेथफुली रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल हां नहीं पिलवान प्रस्तावना जोटा को ओडिया रे व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल सर मु कॉपी करबी कॉपी करले भूल हला माने गाली जगिबिन त मानु तुम जगिबि ना 42nd अमेंडमेंट 1976 परफेक्ट हो जा प्रणाम 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 छोटू वेलकम वेलकम कम इन वायरल गर्ल छोटू मोदी की दुल्हनिया The 42nd Constitution Amendment 1976 ensured the word socialist, secular, and integrity to the preamble. Perfect. In which case did the Supreme Court explicitly hold that the preamble is an integral part of the Constitution? Perfect. कुछ पूछो भगवान के लिए तो सुधरी बनी तुम लोग सुधरोगे नहीं तुम लोग नहीं सुधरोगे केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ केरला ओके हाँ हिंदी केशवानंद भारती केस से तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाँ नहीं पिलवान हाउ फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वे द डीपीएसपी बोरोड एवे आसीगला तमर माने प्रॉपर तमने जदी देखो पिले माने तमदी प्रॉपर थंबनेल पढी दो माने एठी बोरोड फीचर विषय ए टू जेड सब लिखा जायछि मोस्टली सब लिखा जायछि शेड्यूल गुड़ा विषय लिखाई पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखाई प्रीएम्बल लिखाई सब लिखाई मु डिटेल से बन ठीक है परफेक्ट वेरी गुड सॉरी आइलैंड इज अबाउट आंसर पे मैंने हाउ द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आइलैंड परफेक्ट लैंड फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वर द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी गुड परफेक्ट आम यूएसए कहूँ वेरी गुड पे मैंने जवाब नहीं तो मान एमती पढ़ार अच्छे एमती पढ़ले तुम किसी भी ग्राफ कर दो पे मोर बिलीव आई बिलीव फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 जोटा कमी कहूँ ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए बिल ऑफ राइट जोटा कमी कहूँ ना परफेक्ट हाँ
the concept of single citizenship है ना नहीं in the constitution of which borrowed from the constitution of which nation Britain by UK में कहोचे perfect पिले माने very good provision of single citizenship perfect the idea of concurrent list and provisions regarding trade and commerce in the Indian constitution are borrowed from which सब मजा कथा पिले माने सुनिबो गोटे मजा कथा सुनिबो पिले माने सुन मजा फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में कुछ परफेक्ट आंसर वेरी गुड पिले माने अच्छा ଗୋଟେ ଭଲ ମଜା କଥା ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ମଜା କଥା ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ କାଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ବା କାଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ଆଣିଥିଲି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରକାଶ କାଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ଆଣିଥିଲି ତ ଶୁଣ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ଦେଖେଇଲେ ବି ତମାନେ ଦେଖିପାରିବନି କାଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ଆଣିଥିଲି ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବଟ୍ ଆଜି ସକାଳେ ବି ଆଣିଥିଲି ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବଟ୍ ମୁଁ ତା ଥମ୍ବନେଲ ଦେଇଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲି ନା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତେଜାବୁ ହେଇଗଲା ମୋ ସାର୍ ନା କଣ ତେଜାବୁ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ହଁ ସାର୍ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଏବେ ତମାନେ ପାଇବନି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ହଟେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦିଟାଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଥିଲି बट ओके fundamental duties in the Indian Constitution are incorporated upon the recommendation of Swaran Singh Committee from which former nation's constitution perfect very good USSR जोटा का मिलते रशिया है ना नहीं मॉडर्न डेरी ओके पार्ट आई भी मेंशन है ना नहीं परफेक्ट हाँ provisions concerning the suspension of fundamental rights during national emergency were borrowed from which constitution गुरुजी सर नहीं नहीं मोर गुरु नहीं मु कहीं सुनिबी ओएमआर कंसिडर चलनी परफेक्ट हाउ the provisions concerning the suspension of the fundamental rights during emergency were borrowed from the women कौन कुछ constitution okay the procedure for the amendment of the constitution was borrowed from the constitution of which amendment कथा कहि छ ना नहीं खाली बफर नहीं रे बफर नहीं रे पिले माने मोर तम मानकर कोड नेटवर्क इश्यूज होउची साउथ अफ्रीका अच्छा खोरदारे केंती कथा करने छ कोन कि रे तोर बफर होउची हिंदी कहि the procedure for the amendment of the constitution article 368 which borrowed from the constitution of the South Africa how many schedules were there in the original constitution of India enacted in 1950 ଅନୁଗୁଳେ କିରା କହୁଛୁ ତୋର ଉପର ହଉଛି okay 8 schedule question number 111 the constitution of India is originally adopted on November 26 1949 the 22 parts 339 articles are schedules perfect
how many parts were in the original text of the Indian Constitution at the times of its commencement? Come in सत्यजित मास्टर सोटे कोन सारे कहि दिले सर अरे नहीं नहीं मु डिफरेंट डिफरेंट भाषा रे कहउतली बफर होची बोली ताको डिफरेंट डिफरेंट भाषा रे सब कहउतली अनुगुड़िया भाषा खोर्धा भाषा भुवनेश्वर भाषा ये सब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कहय चेष्टा माने डिफरेंट डिफरेंट लोकल टोन ने मु कहय चेष्टा करथि भाषा ने The original Constitution of India consisted of 395 articles divided into 22 parts of parts and 8 schedules to document. माना नहीं पिलवा perfect जयजन सत्य perfect how so which schedule of the Indian Constitution deals with the distribution of the powers between the union and the states to document union list and state list and concurrent list to document कहू छे ठीक है हम कटक गेरी कोनता छे perfect माने very good seventh schedule of the program now the seventh schedule of the constitution deals with the distribution of powers between the union and states with the three-part list okay the schedule of the Indian Constitution lists those officially recognized languages of India जोटा 22 language हमें जानी छे हां नहीं हम कटक रे सिंपल करता नहीं 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 कटक सिंपल के नथला तू कौन कहूचु तू मो बसा को आसी देखनी पिट्टी देवी एमती कथा कहि कटक रे बसा कोन ताकर घर को बसा perfect 8 is the perfect answer of the 8th schedule of the constitution contains the description of 22 recognized official languages of India perfect which schedule was added to the Indian Constitution of the first constitutional amendment act of 1951 to protect land reforms laws from the judicial scrutiny आपण पुटिले क्लास लेट हला मु कोन करि पिले माने म देखुची जेंजी मान सब कांडकार मान सब देखुची कानमा उडा Second चंद्री perfect माने is the pronunciation answer the pronunciation perfect पर प्रश्न को जीवा औ Constitutional Amendment Act 1951 to validate the certain acts regulation notably को land reforms to काम को perfect कर दो which schedule of the Indian Constitution contains the provision regarding disqualification on the ground of defection anti defection law जोटा काम को होचे कोन सर पुणी मु देखुची मजा नउची बिहार सीन देखी मजा आसीला वाह क्या सीन है अगला प्रकार वो अलग लेवल का बंदा 10th schedule is the answer पिलाने very good 10th schedule contains provisions as the disqualification on the ground of defection introduced by the 52nd constitutional amendment perfect whose schedule was added by the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 specifying the powers, authority and responsibility of the panchayats. Mm-hmm. 11th is the proper answer. Very good. The given schedule specifies the powers, authority and responsibility of the panchayats containing 29 functional items. बिहार रो सीन कोन प्रियन जानि छ बिहार रे कोन कर चंदी ना ताको एमपी एमएलए को बाडे दी चंदी बीजेपी रो एमपी एमएलए को बाडे की मेडिकल ले पके दी चंदी प्रियन वेरी गुड पिले माने is the pronounced full schedule हम कहू छै 11 सब कार कर सब आसी कोन 11 दो छै पिले माने माडा हबो काई 11
12th schedule contains powers, authority, and responsibility of the municipalities, featuring 18 subjects. Perfect plan. Part 3 of Constitution of India, Articles 12 to 35 primary deals with which of the following? Syllabus under जाओ छोड़ा सा तो हाँ schedules and parts ठीक है very good. Rights is the proper answer. Very good. Part 3 of the Constitution, Article 12 to 0.3 deals with the fundamental rights. Perfect. Part IB of the Constitution of the India, Articles 1 is dedicated to which part of the following? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର very good ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁଛେ DPSP Directive Principle of State Policy. Perfect. The part IB of the Constitution, Article 36 to 51 କଣ ତ DPSP जोटा ଆମେ କହୁଛେ part IVA जोटा कहुचे Article 51A जोटा हम देखते the Indian Constitution contains the provisions relating to tax. ସାମ ପଛରେ ଅଛି କୋଉଠି ପଛରେ ଅଛ परफेक्ट आंसर जोटा हम कहे फंडामेंटल ड्यूटीज है ना नहीं पे part IBA containing the Article 51A deals with the fundamental duties of citizens. Perfect. Part B of the Constitution of India, Articles 52 to 51 deals with the which of the following? एरा सब मन रखियो पिले माने जो साइलेंट फीचर गुडा त माने कहिचो ना सब अंडर जाउछ ठीक अछि फसल की दोस्तों देबनी जो नहीं सर सिलेबस हिसाब रे कहीं कलेनी परफेक्ट यूनियन गवर्नमेंट इज द परफेक्ट आंसर पिले वेरी गुड Part B of the Constitution, Article 51 to 51 covers the Union Executive, Parliament, Supreme Court, and CAG, Control Auditor General, and from which country's constitution were the republican system and the ideals of the liberty, equality, and the fraternity borrowed. Very good. France question. Perfect answer pile mane. Very good. Oh, the republican system and the principle of the liberty, equality, and the fraternity were borrowed from the Constitution of France. The feature of federation with a strong center and the vesting of residuary powers in the center were borrowed from which? Perfect. जवाब नहीं तो मानगा Canada is the correct answer. The federation with a strong center residuary power with the center and Supreme Court advisory jurisdiction were borrowed from Canada. Perfect answer. Which schedule of the Indian Constitution makes provision for the administration and the control of scheduled areas, scheduled tribes in the states other than Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram? Very good. अच्छा अब तीसरा आंसर तीसरा अच्छा ठीक क्वेश्चन पढ़ी देले पहले माने क्वेश्चन टी पढ़ी दियो पहले माने एक्सेप्ट कहि छी एक्सेप्ट कोन कहि छी अदर देन पढ़ी के आंसर
रेडी पे आसली हो 125 प्रश्न आम थे समस्त भूल भाल तो आंसर दे दीच आम कौन कहे जो कहे 5th शेड्यूल आर्टिकल 244(1) कथा आम कहे हाँ ना 5th शेड्यूल कहले कौटा कहे 244(1) जोटा आम कहे डील्स करे क्या सहित एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट कही मुझे कौन कही एक्सेप्ट बा अदर दैन जोटा आम कहे आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोराम हाँ ना परफेक्ट आर सब आम जाने शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन करार पावर जोटा आम कहे हाँ ना परफेक्ट पे 6th नुहे पे मैंने 6th रे कौन कहे स्पेसिफिक ये जो एरिया गुड़ा को ना इनक्लूड करा 6th रे ठीक अच्छे এটা অদর দেন কইছে না মানে এক্সেপ্ট রাখা যাইছে ঠিক আছে The 5th schedule provides for the administration and control of the scheduled areas and STs in the states other than Assam, Meghalaya and Tripura. So, perfectly and hope. Which article of the Indian Constitution deal with the union and its territory under part 1? कौन पूजा पढ़े गले ये आसीगले जहाँ मोबाइल पिलाटा पड़े गले बोधे मु लेट ही गला ना कॉल आसीला Article 1 to 4 is the proper answer. Part 1 of the Constitution containing 1 to Article 4 deals with the Union and Territory. Perfect. And which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to admit new states into the Union or establish new states? Article 27 number प्रश्न ने आया है तो जल्दी आंसर दे दे मैंने वेरी गुड अच्छा अच्छा ठीक है पूजा नो इशू सो सतीश कोच है आर्टिकल 2 जोटा काम करते बी द प्रॉपर आंसर आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट एंड मेंट बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ India established a state perfect parallel. Which article empowers the parliament to form new states by altering boundaries or names of existing states को जी हाँ ना नहीं फिल्म perfect very good article 3 the proper answer फिल्म है very good Article 3 of the Constitution empowers the Parliament to form new states, alter areas, boundaries, and names of existing states. How? Which part of the part and articles of the Indian Constitution deals with the citizenship? CAA Citizenship Amendment Act गुड़ा को भी आउंडर आउसी होना नहीं पिलाने हाँ very good perfect प्रश्न पूछिबा B is the proper answer पिलाने very good Part 2 and Article 5 to 11 जोड़ा में पूछा हाँ नहीं पिलाने Part 2 of the Constitution spanning from Articles 5 to 11 deals with the comprehensive with the Indian citizenship perfect प्रश्न को जो the comprehensive law enacted by the Parliament regulating the acquisition of and the laws of Indian citizenship is the Citizenship Act of Dash को पूछा में वेरी गुड पिले मैंने परफेक्ट 1945 का प्रेफरेंस हाउ सिटीजनशिप एक्ट 1955 provides for the acquisition and determination of the Indian citizenship perfect how the second schedule of the Indian Constitution contains provisions relating to the emoluments and allowance of dash मिस्टिंग पड़ गले मिस्टिंग को देखा दर्शन नहीं कट पड़े गले परफेक्ट हमको प्रेसिडेंट गवर्नर्स एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जोटा कुछ है ना नहीं हां परफेक्ट बोला माने the second schedule details the salary and emoluments of the president governors and judges supreme court and high court CAG control auditor general perfect प्रश्न को जिबा मैंने आउट क्लास अच्छा अच्छा ठीक है नो इशू थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आम से स्पीड सारिबा फॉर्म्स ऑफ द
forms of oaths and affirmation for constitutional function जोटा कमी कौचे perfect पिलाने the third schedule of outlines the forms of the oaths and affirmation जोटा कौचे कौन शपथ ग्रहण हाँ नहीं fourth schedule of the Indian Constitution is specially concerned with which perfect good evening you very good oh छोटू पड़े वाला छोटू देखा सुनने allocation of seats to states and union territories in the Rajya Sabha perfect लाने a fourth schedule law lays down the allocation of the seats to states and union territories in Rajya Sabha perfect प्रश्न the fifth schedule of Indian Constitution regulates the administration and control of scheduled areas and tribes in हिवा आसीगला नहीं हिवा आसीगला नहीं ट्वीट आसीगला चांद आसीगला ये छोटू इजी रे लिखिदेला states other than Assam, Meghalaya and Tripura major perfect प्रश्न जिबा or the sixth schedule of the Indian Constitution makes special provisions for the administration of tribal areas in which four states very good AMTM perfect Raja Assam Meghalaya Tripura and Mizoram perfect in which case did the Supreme Court initially express the view that the preamble is not a part of the constitution sweetie Gio sweetie la Danava Berubari Union case is our answer very good in the Berubari case the Supreme Court held the preamble was not a part of the constitution very good what does the sovereign what sovereign specified in the preamble of the Indian Constitution signify ठीक अच्छी India is completely independent internally and free from the external control perfect for the प्रश्न को जीवन the term sovereign implies that the India is neither a dependency nor dominion of any other nations but an independent state subject to no external control the word republic in the preamble indicates that it has very good the head of the states is elected directly or indirectly for a fixed term perfect how Indian secularism as enshrined in the preamble means that it has the state has no official religion of its own and treat all religions with equal respect perfect India is a secular state where all religions enjoy equal respect protecting and support from the state without any official state religion perfect the concept of judicial review in the Indian Constitution was borrowed from the constitution of which
Perfect, very good. This is the right answer. I mean USA coach है Oh, the concept of judicial review and fundamental rights were borrowed from the Constitution of the USA. Perfect. The principle of rule of law incorporated in the Indian Constitution is derived from the Constitution of which? Written ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ନାଇଁ very good. ଠିକ ଅଛି. Rule of law is single citizenship and parliamentary system are borrowed from the British Constitution. Perfect. The advisory jurisdiction of the Supreme Court was borrowed from the Constitution of which country? ठीक है, very good. Canada is the perfect answer. Notes advisory jurisdiction and federation with a strong center were borrowed from the Canadian Constitution. Perfect. The method of election of the President of India was borrowed from the Constitution of which? Very good. Helen is the correct answer. Very good. Part X article 368 20 हाँ 20 भाग जोटा हम कहे 368 of the Indian Constitution deals with which of the following? Amendment of the Constitution. Very good. पहले मैंने part 20 article 368 the Constitution deals with the power of the Parliament to amend the Constitution of its procedure. The 10th schedule added to the Constitution by 52nd Amendment Act 1985 is commonly known as DAS. Anti-division law is the correct answer for the question of the job. Part IX ए जोटो हम कहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 243 टू 243 पी जोटा कहे 2 243 जेड जी जोटा हम कौन सो होउछि तमने the municipality is the correct answer. Very good. Of the part X of the Constitution contains the provision of the Article 23, sorry 243 P to 243 ZC entitled the municipalities. Perfect preparation. The part IX of the Constitution, Indian Constitution, Article 243 to 243 O deals with which? Very good. I'm going to panchayats, है ना नहीं? Okay. Part XI of the Indian Constitution, Article 245 to 263. Let's do test. Perfect. Very good.
पूरा आंसर दियो ना रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट नहीं Article 250 in the Part XI of the Constitution deal with the legislative and administrative relations between the center and the state. Part X B.ED of the Indian Constitution, Articles 352 to 360 deals with it as perfect. Emergency provisions. Perfect. And forward question hojiba. It was Part X B.ED of the Constitution containing the Article 360 to the emergency provisions. Perfect. Which part of the Indian Constitution contains the provisions for the amendment of the Constitution under Article 368? देखिए ये तो जार भूल हो माड़ गोटे बाहर जी कौन सो झगड़ा चलती कौन सो झगड़ा तो चलती माड़ा हो जो तो वहां पर सब माड़ा हो तो पार्ट 20 हमें कुछ परफेक्ट प्लान है ओके नेक्स्ट चिबाइबे which article of the constitution establishes India as a union of states श्रद्धा झगड़ा कर article and the answer परत प्रश्न को जिबा and which article of the constitution can parliament admit new states into the union of India ठीक है छाओ हाओ भाइलेंट हुआ ना यही गोटे छोट कथा तो मैंने कहीं झगड़ा कर झगड़ा करना झगड़ा आमर करिया कथा गवर्नमेंट सांगे देखुन तांकर सब चलानी झगड़ा तहन सब झगड़ा रहा झगड़ा सब बंद कर आंसर दिए पड़े सब Article 2 is the correct answer. Question which I am going to which article of the Constitution empowers the Parliament to form a new states by altering the boundaries of existing states? Article 3 is the correct answer. It झगड़ा बंद सब सेट वन पार्ट को ध्यान दियो which part of the constitution deals with the emergency provisions सेटा डबल रिपीट ही जाई किछ क्वेश्चंस रिपीट करला पछी ताहले कितना ही तंग सो चला कौन सो तुम्हारा चली छे सब 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 पढ़ पढ़ सब आओ
which part of the constitution contains provisions relating to elections से कथा समस्ते छाड़ कौन दी गोटे छोट मोट कथा तुम सब धरी बस कि क्या कथा धर ना समस्त आंसर दियो समस्त मो कथा को धर आंसर दियो सब साइलेंट की आंसर दो ना पार्ट एक्स भी हमें पूछे पार्ट एक्स आर्टिकल 324 टू 329 ए जोटा को कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ कौन इलेक्शंस पार्ट एक्स आई भी ए of the Indian Constitution containing Article 323 A, 323 B deals with which of the following? पूजा कोड़े गले पूजा पूजा कोड़े गले तमन समस्त आंसर तब ठीक अच्छे ठाऊ से कथा को छाड़ा एबे से कथा को छाड़ा समस्त कथा से कथा छाड़ा एबे एबे से कथा को छाड़ा समस्त एबे आंसर दियो कहार भूल न आंसर आंसर पूजा मोर आंसर दरकार पड़े आंसर ना मु गाड़ी करी Tribunals for answer. Which part of the Constitution deals with the official language provisions under Article 343 to 351? समस्त आंसर दियो प्रणाम प्रणाम निकिता Oh, please the answer it's B.ED. Now, which schedule of the Constitution lists the names of OTET, state and 8 union territories with the territorial demarcations? आंसर दिलो आंसर दियो समस्त आंसर दियो जहाँ को देखिए आंसर न दी तो गाली सुनिबो पूजा कोड़े गला आंसर कहीं दोनों समस्त आंसर दियो तो समस्त आंसर देते रहे मैंने वो देखिबा आर परफेक्ट आंसर किए दउछि समस्त तो चली भूल ही चली देखिया परफेक्ट आंसर किए दउछि पॉलिटिकल साइंस थ्योरी हाँ पॉलिटिकल साइंस थ्योरी पे प्रिपेयर कर दीजिए स्टार्ट हो बहुत जल्दी शेड्यूल इज द आंसर हाउ पूजा बहुत बढ़िया हाउ लिस्ट ऑफ 28 सेट्स एंड 8 यूनिट्स विद part text double I the Indian Constitution Article 364 300 A primarily relates to tasks so schedule सुडा का हमारे पे चली है ना नहीं तो पॉलिटिक्स ठीक कम नॉलेज ताले पढ़ो पॉलिटिक्स ठीक कम नॉलेज पढ़ो पॉलिटिक्स पर बुकटा प्रिपेयर हो जे बुकटा ठीक टाइम लागो जे और फाइनेंस प्रॉपर्टी contracts and suits Article 264 300 deals with the finance, property and contracts and suits.
Article 300A, which establishes the right to property as an ordinary legal right instead of the fundamental right, is located in which part? Tensor A जोटा करूँ very good. Legal rights. समस्त आंसर दिला भीतर कोटा या भीतर कोटा आंसर मत दिला. Part X double I जोटा कमी कुछ है ना नहीं. आप पूर्व क्वेश्चन पर समस्त आंसर दे दिला. Perfect. Right to property was placed in a new article 300A, part X double I of the Constitution. Perfect. Part X triple of the Constitution, Article 301 to 307 contains the provisions regarding das. Very good. What about? Perfect. Among the trade, commerce, and intercourse within the territory of India. Perfect. But XAA Article 307 deals with the trade, commerce, and the intercourse within the territory of India. Perfect. But except the Constitution, Article 3082 to 323 relates to which of the following? Perfect. Answer. Which article in the part 3 abolishes untouchability and prohibits its practices in any form? And answer the pillar pani tiki pidi. Very easy water. Good evening. Good evening. 163 tama question agitile. Perfect. B ko chana version of untouchability awards. Article author of the Constitution provides Constitution provides for the task. Taporata, Satara Porata. Perfect. Abolition of title should I go check. Which articles of the Constitution guarantees the 6 fundamental freedoms of speech and expression, assembly, association, and movement, residence and profession? Good evening, Indirani. Article 19. Article 21A, inserted by the 86th Amendment Act 2002, makes which of the following a fundamental rights? Perfect. Right to education for children of age 14. एटा मन रखियो जो माने टीचिंग एग्जाम ପାଇଁ प्रिपेयर होउछो एई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल टा टिके भला से मन रख पिलाने. Which article of the Constitution prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine, or hazardous employment? C24 is the correct answer. C24 कह 24 तो ठीक है सर 24 तो ठीक है. हाँ. Special provisions for the protection of children is made in Article 24, which prohibits the employment of children below 14 in factories or mines. Which article of the Indian Constitution was termed as heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? Perfect.
constitutional remedies आम जहाँ को ना right to constitutional remedies जो कुछ guaranteed by the Article 32 was termed by the soul of the Constitution by Dr. B.ED. Under which article can Supreme Court issue writs for the enforcement of the fundamental rights? Perfect प्रश्न को जो आंसर देबे माने very good पिले माने 30 is the correct answer. Very good. Under which article can a high court issue writs for the enforcement of fundamental rights and for any other purposes? शुण पे मैंने 170 टा डिस्कशन करवा पुणी 9:40 आम एग्जाम बाकी जितक क्वेश्चंस आउ 30 सहित आउ 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं रखी डिस्कसन करवा ठीक अच्छे 26 तो करेक्ट आंसर ना कौन कह पे आग को आहरी माने 50 प्लस 30 80 टा क्वेश्चंस अच्छे आम राति 9टा डिस्कसन करवा सॉरी साढ़े माने 9:50 डिस्कसन करवा 40 कि 50 समस्या आसी पहुंची जीवो तबको हम डिस्कशन आगे कर 50 हेले परफेक्ट हे जीवो समस्त 50 राशि पहुंच जेबले ठीक अछि हां हां अगेन थैंक यू समस्त को जगन्नाथ सारी सेशन बंदे उत्कल जर्नी पे माने पुणी देखा नेक्स्ट क्लासेस रे जस्ट 30 मिनिट्स पर